बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुमताज़ अहमद। आज हम डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है किस तरीके से काम करता है, इसकी अफादियत क्या है और डॉट नेट फ्रेमवर्क आने से पहले हम किस तरीके से काम करते थे। इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। बिफोर डॉट नेट फ्रेमवर्क, Windows GUI development was done in Windows 32 or Win32, API Application Programming Interface, MFC, Microsoft Foundation Class Libraries, Visual Basic, COM यानी कि Common Object Model. Windows GUI development means Graphical User Interface. Web development was done using ASP, Active Server Pages. उस वक़्त तक अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क जो था वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। जब ये वेब डेवलपमेंट सिंपल होती थी तो क्लासिकल ASP यूज़ किया जाता था। बाद में फिर डॉट नेट में ये सारी वेब डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। जावा उस वक़्त तक इंट्रोड्यूस हो चुका था। जावा जो है वो राइट वंस रन एनीवेयर की पॉलिसी के ऊपर काम करता है, यानी कि वोरा वंस राइट वंस रन एनीवेयर। व्हाट इज डॉट नेट? डॉट नेट इज अ फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. It's a new programming paradigm. .NET is a platform independent और क्रॉस प्लेटफॉर्म. इसका मतलब ये है कि .NET के अंदर बनने वाला कोई भी प्रोजेक्ट, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया हो, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि किसी भी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी किस्म के हार्डवेयर के ऊपर वो प्रोग्राम जो है वो इजीली रन हो सकता है। सिमिलरली क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये रन हो सकता है, कि यानी कि किसी भी और अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। डॉट नेट इज अ लैंग्वेज इनसेंसिटिव. इसका मतलब ये है कि जो डॉट नेट के अंदर लैंग्वेजेस पाई जाती हैं वो इनसेंसिटिव है। अभी हम बात कर रहे थे डॉट नेट इज़ अ लैंग्वेज इनसेंसिटिव, मीन कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केस सेंसिटिव हैं और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केस इनसेंसिटिव हैं। यानी कि छोटे और बड़े लेटर्स के अंदर वो किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं करती। अपर केस में लिखे जाए कोड या लोअर केस में लिखा जाए, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉट नेट जो है वो हमें डिफरेंट फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE, इंटरनेट, डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन जो है उसको फैसिलिटेट करता है। डिस्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से। एक पहले क्लासिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम था, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इंट्रोड्यूस किया गया और अब जो है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है, डॉट नेट पैराडाइम जो है वो एक नई प्रोग्रामिंग टेक्निक या पैराडाइम की शक्ल में इंट्रोड्यूस करवाया गया। टू प्रोवाइड अ पोर्टेबल एनवायरनमेंट, अ मैनेज एनवायरनमेंट, these are the advantages or the things, the features which are provided by the .NET framework. Now we are going to introduce .NET architecture. .NET architecture is multi-language, cross-platform, based on the CLR, Common Language Runtime, FCL, Framework Class Libraries, and JIT, Just-in-Time Technology. .NET components are packaged as assemblies. .NET architecture you can visualize here. जो सबसे टॉप लेयर है वो लैंग्वेज लेयर कहलाती है,
इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो रखी गई हैं, जैसे VB.NET है, सी विजुअल C++ है, C#.NET है, JScript है, F-Script है और बेशुमार अदर लैंग्वेजेस जो है। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है कि कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो क्या करती है, इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद ASP.NET, वेब सर्विसेज एंड वेब फॉर्म्स और अलॉन्ग विद देयर इज अ विंडो फॉर्म। ADO अगली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड ADO.NET. Languages which are supported by .NET framework. Over 35 languages are supported now: C#, VB, JScript, Visual C++, Perl, Python, Smalltalk, COBOL, Haskell, Mercury, Eiffel, Auburn, Oz, Pascal, APL, Camel, Scheme and many more. तो मोर देन 35 लैंग्वेजेस, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया जिसके अंदर 35 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है उनकी सपोर्ट अवेलेबल हो। तो जनाब दूसरे नंबर पे हमारी जो लेयर ऊपर से आ रही थी दैट इज़ कॉल्ड कॉमन टाइप सिस्टम, CTS, अ स्पेसिफिकेशन फॉर हाउ टाइप्स आर डिफाइंड and how they behave. No syntax specified, किसी किस्म का specific syntax जो है वो specified नहीं है using CTS. A type can contain 0 or more members. It may be a field, it may be method, may be property, and may be event, and may be none. Common type system is a formal specification that describes how a given type must be defined for CLR, mean Common Language Runtime. CTS class type, CTS structure type, CTS interface type, CTS enumeration type, CTS delegate type. Then CTS class type, same as C++ classes, can contain members, methods, properties and events. Support for abstract members that define a polymorphic interface for derived classes, multiple inheritance is not allowed. CTS class characteristics. Yes, CTS class characteristics. Sealed classes can't function as base classes. Implement any interface. An interface is a collection of abstract members, abstract or concrete abstract classes to define common behaviors for derived, cannot be created directly but कंक्रीट क्लास कैन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर जो है वो डिराइव्ड क्लासेस के लिए बयान करती है, एक्सप्लेन करती है, लेकिन इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप क्रिएट नहीं करते. विजिबिलिटी एट्रीब्यूट टू नो वेदर एक्सटर्नल असेंबलीज कैन यूज इट और नॉट. CTS structure types, same as C or C++, derived from a common base class, system value type, system.value type, and then you can see the CTS enumeration type to group name or value pairs under a specific name having a default storage such as system.int32 could be changed. Then you can see the CTS interface type, same as pure abstract class of C++, a description of work that a derived class can perform.
similar to a class but can never be instantiated. CTS delegate type, same as C's function, pointer, system dot multicast delegate, useful for event handling, ASP.NET. Yes, here you can see the CTS data types. .NET base types are here, and C# with comparison you can see if there is a base type system.byte, it can be represented in byte, simply byte. S byte means short byte, that is represent as small byte in C#. System.int16, that is represented by short in C#. System.int32, that is represented by int. System.int64, that is represented by long. System.uint64 is represented by unsigned long. System.single is represented by float in C#, double, object, string, and bool as well. CLS, common language specification compliance. C# type, there is byte, CLS compliance, yes. Short byte, no. Short, yes. Int, yes. Long, yes. And these are the different compliance you can easily verify there. Float is available, double is available, object is available, string is available, and character is available. Only unsigned long and short byte is not available in CLS compliance, while it is available in C# as well. We are talking about CLR, that is called Common Language Runtime, and Common Language Runtime for all .NET language. Common time system, common metadata, intermediate language to native code compilers, memory allocation and garbage collection, code execution and security. These are the features which are provided by Common Language Runtime. Execution engine, compilers, and compiles Microsoft Intermediate Language, that is called MSIL, into native code. You can say it in short IL, CIL or MSIL. MSIL stands for Microsoft Intermediate Language, CIL stands for Common Intermediate Language, and simply you can say IL, that is called Intermediate Language. Common Language Runtime also handles garbage collection, it also handles exceptions, enforce code access security, handles verification, managed and unmanaged code as well. Here you can see CLR execution model. The top layer, as we have earlier discussed, that is the language layer, where is the source code is written in whether in VB, C#, C++, JavaScript, Perl, Haskell, and any other language, and each language has its own compiler. It will compile the source code into managed code, that is called assembly, or the intermediate code, IL. And unmanaged, what is the difference between managed and unmanaged code? Managed code are converted into provided to the Common Language Runtime. It cannot run directly, as unmanaged code that is directly executed by the operating system services. While managed code, you need a Common Language Runtime, and Common Language Runtime has a JIT, just in time compiler. It will convert all the IL intermediate language code into native code, and that native code can be executed by any kind of operating system services. And then
Advantages of CLR. अब CLR के advantages. Support for developer services such as debugging, interoperation between managed and unmanaged code. You can say there is interoperation between COM, that is unmanaged code, common object model, and DLLs, which are created by .NET framework. And DLL, and what is the difference between DLL files and executable files? DLL files provides a support to execute any kind of other executable file, while executable files can directly execute by the operating system services. Managed code environment, improved memory handling, improved garbage collection, or the memory management, or the unused irrelevant data also wiped out from the memory. And if there is a short memory, there is a heap is created to allocate any kind of object. Advantages of CLR. JIT allows code to run in a protected environment as managed code. Just in time. JIT allows, यानी कि उस कोड को अलाउ करता है इन अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट एज अ मैनेज्ड कोड. JIT allows the IL, यानी कि इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट लैंग्वेज. JIT इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को हार्डवेयर इंडिपेंडेंट बनाता है. इसी को हम कहते हैं कि दिस इज इंडिपेंडेंट platform. CLR also allows for enforcement of code access security, as we have already discussed that JIT run this code in a protected memory protected environment, therefore it makes sure the access security as well. Verification of type safety as well. CLR, this is the architecture of CLR. There is .NET source code, you can see here from the left in green color, and also you can see this is our .NET source code, and this one is .NET compiler. This source code can be written any kind of language. It may be VB.NET, C#.NET, J#, or JScript, or any other language, F# or Python or Haskell and so on. And this .NET compiler can create two types of files. It may be a DLL file or may be an executable file. There is a base class libraries that is provided by the Microsoft core libraries.dll, and this is the class loader. There is a jitter, platform, specific code, execution, and the then .NET execution frame. There is a .NET execution engine as well. .NET namespaces. MFC, Microsoft Foundation classes, Java, VB6 have predefined set of classes, but C# doesn't. C# uses namespace concept. Any language targeting the .NET runtime makes use of the same namespaces and same types as C#. System is the root namespace in C#. Here is, you can see the sample of .NET namespaces, systems and primitive types, garbage collections, etc. Here you can see this is a system, and this is the primitive types of garbage collection, etc.
Here you can see the system collections, container objects, array list, queues, etc. System.data for database manipulations and ADU.NET, system.data.common, system.data.oledb, system.data.sql client. Common data types. CLR provides a set of primitive types that all languages must support. The data types include integer, 3 types we have earlier discussed, 16, 32 and 64 bit. Float in the form of single and double, while in C# there is float and double, and boolean and character, date and time span. Okay, the primitive types can be collected into arrays, structures and combination of these two. Here you can see not all languages support all CTS types and features. C# is a case sensitive, VB is not a case sensitive. We have earlier discussed that C# is case sensitive while VB.NET is not a case sensitive language. C# supports pointer types in unsafe mode. C# supports operator overloading. VB.NET does not support operator overloading. CLS was introduced to promote language interoperability. That is the most important feature of CLS, Common Language Specification. That is interoperability, cross-platform, platform independent. The vast majority of classes within framework class libraries are CLS compliant. Base class library, similar to Java's system namespace, used by all .NET applications, has classes for I/O, threading, database, text, graphics, console, socket, web, mail, security, cryptography, COM, runtime type, discovery, invocation and assembly generation. Then FCL, framework class library at base class library. Single consistent set of object oriented class libraries to enable building distributed web application. This is we have earlier discussed in unified classes. Here you can see this is a unified classes. Base classes library as framework class libraries. Here is a base class library. Here you can see the framework class libraries at BCL, built using classes arranged across logical hierarchical namespace. Work with all CLR languages. आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं. आज हमने अपने लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू .NET फ्रेमवर्क देखा. हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की, इसके एडवांटेजेस डिस्कस किए. .NET फ्रेमवर्क पे माइक्रोसॉफ्ट ने लेट 90s के अंदर काम स्टार्ट किया और इसका पहला रिलीज़ जो था, पहला वर्जन जो था वो 14 फरवरी 2002 के अंदर मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया. इसके बाद हमने आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क को लेयर बाय लेयर डिस्कस किया. फिर हमने CTS कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशंस को देखा, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम देखा, IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज और कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज के बारे में देखा. आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद .NET फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.